Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme, Sensory Defects, with special reference to visually impaired. Dear students, sensory defects are those defects which lies with different sensory organs like sense of sight, sense of hearing, sense of touch, sense of smell, and sense of taste, keeping in view the special education. There are three prominent sensory defects, such as sense of vision, sense of hearing, and sense of speech. ये तीन prominent sensory defects माने जाते हैं. In today's lecture, we will discuss meaning and concept of visual impairment. As we know that senses are called the gateways of knowledge. It means every bit of knowledge is received through different sense organs like sense of sight, sense of hearing, sense of touch, sense of smell, and sense of taste, keeping in view the importance of eyesight. Eyesight is being considered, I mean to say you sense of sight, ये सबसे important sense मानी जाती है. There is hardly any task where we cannot use the sense of sight. इसीलिए it has researchically proved 90% knowledge is received through the sense of sight and sense of hearing. और बाकी 10% जो knowledge है वो हम रेस्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करते हैं. जब हम स्पेशल एजुकेशन के प्रिज्म से देखते हैं, विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु possesses डिफेक्टिव सेंस ऑफ साइट. चाहे इनमें पार्शियल विजुअल इंपेयरमेंट होगा या टोटल विजुअल इंपेयरमेंट होगा. पार्शियल विजुअल इंपेयरमेंट में लो विजन बच्चे आते हैं और टोटल विजुअल इंपेयरमेंट में ब्लाइंड पॉपुलेशन आती है. तो नटशल में हम कह सकते हैं विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर विजन. नाउ वी विल फोकस ऑन सर्टेन डेफिनिशंस in order to understand the visual impairment in broader perspective. Number 1, World Health Organization, which is abbreviated as WHO, visual impairment refers to a functional limitation of the eye or visual system. Dear students, what is the functional limitation of the eye or visual system? It means visually impaired बच्चे जो है they are facing number of challenges or difficulties to perform various types of tasks. वो डे टू डे लाइफ में टास्क्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं because they have lost the vision. For instance, mobility challenges. Mobility challenges means अगर विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो उन्हें बहुत से मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है. इट्स वेरी हार्ड फॉर द विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, या हम कह सकते हैं पॉपुलेशन, दैट टू मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस ड्यू टू द विजुअल इंपेयरमेंट. चाहे उन्हें वॉशरूम जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इवन कि अगर वो चले भी जाते हैं तो उन्हें वापस आना बहुत मुश्किल होता है. They are also facing the challenges in terms of
रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि एजुकेशनल एस्पेक्ट में पढ़ने के वक्त भी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और लिखने के वक्त भी, रिकॉग्नाइजेशन में भी, स्पेशली वो चेहरों को नहीं पहचान पाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम डज नॉट लाइज विद देयर मेमोरी, मेमोरी उनकी या और कोई कॉग्निटिव एबिलिटी उनकी नॉर्मल बच्चों जैसी होती है, लेकिन विजन की प्रॉब्लम की वजह से वो पहचान नहीं पाते हैं whether they have to recognize the things, animals or human beings. By and large, ये वो population है which remains entirely dependent on devices. ये devices पे dependent है, like eyeglass, magnifiers. Apart from it, medicine and surgery. Number second, American Foundation for the Blind, which is abbreviated as AFB. Visual impairment is significant reduction in vision that cannot be corrected with standard eye glasses, contact lens, medication or surgery. यानी कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चे जो है उन्हें हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं विजुअल इंपेयरमेंट को, अगर हम उन्हें प्रिस्क्राइब ग्लासेस भी देंगे या कॉन्टैक्ट लेंस भी उन्हें प्रोवाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, मेडिकेशन और सर्जरी से भी विजुअल इंपेयरमेंट को ठीक नहीं किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सर्जरी और मेडिकेशन से हम उन्हें विजुअल इंपेयरमेंट में सुधार ला सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिसेबिलिटी जो है वो वही की वही रहेगी। तो इसीलिए अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड ये डिफाइन करते हैं विजुअल इंपेयरमेंट को, यानी कि इट इज दैट वेरी इंपेयरमेंट विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग द लेंसेज, मैग्नीफायर्स और विद द हेल्प ऑफ सर्जरी और मेडिकेशन। इन चीजों से ये अपनी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज और टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली इसे हम स्मैश और शटर नहीं कर सकते हैं। नंबर थर्ड, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड, विच इज एब्रिविएटेड एज RNIB. Visual impairment is a term that describes any degree of vision loss that has an impact on a person's daily life. The vision loss varies from category to category. That is why we classify the visually impaired into various categories. For instance, mildly visually impaired. Mildly visually impaired वो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे होते हैं जिनमें विजुअल एक्यूटी 6/9 और 6/12 होती है। It means what the normal eye can see the things at the distance of 12 feet or 9 feet that can be seen by mildly visually impaired at the distance of 6 feet. यानी कि नॉर्मल आई साइट वाला पर्सन जिस चीज को 12 फीट या 9 फीट से देख सकता है, उसी चीज को माइल्डली विजुअली इंपेयर्ड बच्चा 6 फीट से देख सकता है। और ये बच्चे उतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते हैं इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। इसी तरह से मॉडरेटली विजुअली इंपेयर्ड, moderately visually impaired children are those children जिनमें विजुअल एक्यूटी 6/24 होती है। It means what the normal eye can see the things at the distance of 24 feet that can be seen by the moderately visually impaired
एट द डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। यानी कि नॉर्मल आई साइट वाला पर्सन जिस चीज को 24 फीट से देख सकता है, उसी चीज को मॉडरेटली विजुअली इंपेयर्ड पर्सन 6 फीट से देख सकता है। और ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है एज कंपेयर टू द माइल्ड विजुअल इंपेयरमेंट। इट मीन्स इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स आती है ड्यू टू द विजुअल एक्यूटी, या हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ विजन लॉस। इसी तरह से सिवियरली विजुअली इंपेयर्ड देयर स्टूडेंट्स, these are those children who possesses visual acuity 6/60। It means एक नॉर्मल आई साइट वाला पर्सन जिस चीज को 60 फीट से देख सकता है, एंड सेम थिंग कैन बी perceived by the severely visually impaired at the distance of 6 feet। और लास्ट लेवल जो है दैट इज प्रोफाउंड लेवल, और उन बच्चों को हम कहते हैं प्रोफाउंडली विजुअली इंपेयर्ड। ये वो बच्चे हैं who possesses zero visual acuity, means NLP। The full form of NLP is no level of perception, जिसमें टोटली ब्लाइंड्स आते हैं। यानी कि ये वो बच्चे हैं जिनमें 100% विजन लॉस होता है, उन्हीं को हम कहते हैं प्रोफाउंडली विजुअली इंपेयर्ड। तो नेचुरल में हम कह सकते हैं जो सिवियरली और प्रोफाउंडली विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं ड्यू टू द डिग्री ऑफ विजन लॉस, उनकी लाइफ जो है वो हेल बन जाती है। दे आर फेसिंग ट्रबल्स, हार्डशिप्स in the life while performing various types of activities or tasks due to the high vision loss. This was all about the today's lecture. In next lecture we will discuss types, या simply हम कह सकते हैं classification of visually impaired children। किन किन कैटेगरीज में हम विजुअली इंपेयर्ड पॉपुलेशन को क्लासिफाई करते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट को मोर समझने के लिए यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन फ्लो डायग्राम्स। फ्लो डायग्राम्स की मदद से आप विजुअल इंपेयरमेंट को समझ सकते हैं। इफ यू रियली एंजॉयड माय लेक्चर, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग।